वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने I2C कम्युनिकेशन इंटरफेस का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैन दैट इज़ कंट्रोल एरिया नेटवर्क एंड SPI इंटरफेस का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो सेकंड टाइप ऑफ ऑनबोर्ड इंटरफेस इज़ द controlled area network. So in short form it is a CAN. So it is first introduced in February 1986 by Robert Bosch. So developed because existing serial buses in early 1980s were not able to fulfill all the requirement to be used in the passenger cars. ठीक है, तो 1986 में रॉबर्ट बॉश ने इन्वेंट किया था कंट्रोल एरिया नेटवर्क। सो दैट इज़ डेवलप बिकॉज जो एग्जिस्टिंग बसेस यूज़ हो रहे थे माइक्रो कंट्रोलर में 1980s में, ठीक है, तो वो फुलफ़िल नहीं कर रहे थे जो रिक्वायरमेंट है पैसेंजर कार्स में। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता है। ठीक है, तो 1980s में जो सीरियल बसेस यूज़ हो रहे थे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम में, सो दे आर नॉट एबल टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द advanced level. So that's why purpose CAN, that is a control area network, is come into the picture. So Intel will release this first CAN control chip in 1987. 1987 ने में Intel ने जो फर्स्ट CAN कंट्रोल चिप डेवलप किया था। ओके, इन 1993 CAN ISO standard was published. So the first application include the use of elevator manufacturer एंड सम टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन या जिसमें जिस कंट्रोल एरिया नेटवर्क इंटरफेस यूज़ किया गया था वो था एलिवेटर मैन्युफैक्चर एंड टेक्सटाइल मशीन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया गया था। ठीक है, सो देर आर सम फीचर्स ऑफ दिस कंट्रोल एरिया नेटवर्क. So first one is the CAN is the multi-master bus with open and linear structure with one logic bus line and the nodes. So the number of nodes is not limited by the protocol. तो CAN में जो है मल्टी मास्टर जो यूज़ किया गया है, मीन्स इसमें एक से ज़्यादा यहाँ पे मेन प्रोसेसर यूनिट्स होंगे मास्टर एंड different flaws are connected to this master. So that is the first feature. In CAN protocol, the bus nodes do not have a specific address. Instead, the address information is contained in the identifiers of the transmitted message. Then multicasting and broadcasting is supported by the CAN. ठीक है, तो multicasting and broadcasting of data is supported by this CAN network. So the data speed of this CAN bus is the higher, that is 1000 kbps is the maximum data bus length. Okay, that is up to the 130 feet of twisted pair cable is connected. Okay, so for 130 feet twisted pair cable, the data bit transfer rate will be a 1000 kilobytes. So that is also one of the feature of this CAN bus. Next is the architecture. So here architecture is given of CAN network or CAN bus node. So in that there is a CAN transmitter is there, CAN controller is used on the onboard which is in the microcontroller. So that is a simple CAN node is there. So CAN is the multi-master serial bus standard for connecting the electronic control unit, that is ECU, also known as a nodes. ठीक है, तो ECU का हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं सेकंड यूनिट में. सो CAN में मल्टी मास्टर सीरियल बस इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा. सो देर आर 2 or more nodes आर रिक्वायर्ड ऑन द CAN नेटवर्क टू कम्युनिकेट. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो सिंगल CAN नोड का है. ठीक है, जिसमें CAN कंट्रोलर एंड CAN ट्रांसमीटर इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस बस. So like that there are 2 or more nodes are connected in the CAN for communication purpose. The complexity of the node can be ranged from simple IO devices up to an embedded computer with the CAN interface. ठीक है, तो complexity जो है वो यहाँ पे नोड भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्ट है एम्बेडेड कंप्यूटर के साथ, दैट कैन बी आल्सो यूज.
So the next point is central processing unit, microprocessor or host processor. The host processor decide the receive message mean and what message it wants to transmit to the sensor, actuator and control devices can be connected to the host processor. ठीक है, तो कैन बस में या कैन नेटवर्क में यहाँ पे सेंसर, एक्चुएटर एंड कंट्रोल डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं प्रोसेसर के साथ, दैट इज़ द मेन प्रोसेसर. And in these sensors, actuator and control devices, the data can be transmitted and received with the help of this CAN network. Second, CAN controller often used as an integral part of the microcontroller. ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट में भी हम कैन कंट्रोलर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. द कैन कंट्रोलर स्टोर्स द रिसीयल और रिसीव द सीरियल बिट्स फ्रॉम द बस अंटिल द एंटायर मैसेज इज अवेलेबल. ठीक है, तो कैन बस में यहाँ पे बफर मेमोरी यूज़ किया गया है. ठीक है, तो कैन कंट्रोलर जो है वो जो भी डेटा रिसीव होगा, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस से, ठीक है, so that serial bits are stored, and after that it will be a transfer that message on the bus if the bus is free, so which can then fetch by the host processor. So for sending, the host processor sends the transmitted message to the CAN controller. ठीक है, तो जो भी होस्ट प्रोसेसर कनेक्ट होगा कैन नेटवर्क में, so it can send or transmit the message to the first CAN controller, and the CAN controller transmit the bit serially onto the bus when the bus is free. ठीक है, तो इस तरह से सेंडिंग एंड रिसीविंग का वर्क यहाँ पे CAN नेटवर्क में होता है. ठीक है, so that is the main architecture of the control area network. Then we'll take the advantages and disadvantages of this CAN network. So the first advantage is low cost, lightweight network. So CAN provides the inexpensive, durable network that helps the CAN devices to communicate with one another. It also decreases the several and weight in the automobile. ठीक है, तो CAN नेटवर्क का जो यूज़ है उससे लो कॉस्ट एंड लाइट वेट नेटवर्क पॉसिबल है. ठीक है, तो जिसमें इनएक्सपेंसिवनेस एंड ड्यूरेबल ऑफ नेटवर्क will be provided by this CAN. Also CAN devices can communicate with one another. ठीक है, and also the size of this CAN network is also less, that's why the weight in the automobile is also decreased. So that is the first main advantage of this CAN network. Second, broadcast communication is there. तो जैसे हमने स्टडी किया कि यहाँ पे मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है कैन नेटवर्क. सो ईच ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क हैज़ अ कैन कंट्रोलर एंड देयरफॉर इट इज़ इंटेलिजेंट. ठीक है, तो जैसे हमने आर्किटेक्चर में देखा कि कैन नोड में एक कैन कंट्रोलर भी कनेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर के साथ. सो ऑल द डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क see all the transmitted message, and each device can decide if the message is relevant or it should be a so this structure allows the modification of CAN network. ठीक है, तो यहाँ पे CAN कंट्रोलर का यूज़ किया गया है. ठीक है, so which is the intelligent device. So all the devices in network can see the transmitted message. ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है नेटवर्क में वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा डेटा कौन से डिवाइस में यहाँ पे सेंड आउट हुआ है. ओके, थर्ड वन इज़ द प्रायोरिटी. एवरी मैसेज हैज़ द प्रायोरिटी, मीन्स हाईएस्ट, लोएस्ट एंड मॉडरेट. ठीक है, तो 3 टाइप्स के प्रायोरिटीज़ होते हैं. सो इफ़ 2 नोड्स आर ट्राई टू सेंड द मैसेज साइमल्टेनियसली with one with the higher priority and gets transmitted and one with the lower priority get postponed. ठीक है, मीन्स यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट होंगे बाय यूजिंग दिस CAN network. So there is a possibility when the 2 machines will send the data simultaneously on the bus, but that data will be sent according to the priority level. Suppose this A and B machine will send the data simultaneously on the data bus in the CAN network. So this A has a higher priority message and B has the moderate level of priority. So at that time the data from this higher priority device, that is A, will be transmitted first through this bus,
and after that this data from this B device will be transmitted, which has the lowest or moderate priority, like that. So priority will be decided in this CAN network, so which is one of the advantage. Fourth one is the error capabilities. So the CAN specification includes the cyclic redundancy code, that is CRC code, which is performed for error checking on each frame और द कंटेंट्स, ठीक है। तो एरर चेकिंग के लिए कैन नेटवर्क में CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, दैट इज़ वन ऑफ द टेक्निक फॉर एरर फाइंडिंग इन द डिजिटल डेटा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। सो दीज आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ दिस कैन नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ द डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट इज़ द रेगुलेट वायर लेंथ, पर्टिकुलरली फॉर हाई स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायर लेंथ है, सो दैट कैन बी अ स्मॉलर वन, सो टू इंक्रीज द or to get the high speed the length of wire required will be a lesser. Next one requires the terminator resistor. So these two are the disadvantages of this CAN network. Next onboard interface for the embedded system is the serial peripheral interface, which in short called as a SPI. So serial peripheral interface or SPI is a synchronous serial communication protocol that provides the full duplex communication at very high speed, ठीक है। तो SPI एक सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस है, ठीक है, जो कि सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल मीन्स ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर बोथ कैन ट्रांसमिट एंड द रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली, so that is a full duplex communication. So the serial peripheral interface, that is SPI, is a master and slave type protocol, ठीक है। तो जैसे हमने I2C में स्टडी किया था, सेम कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज मास्टर एंड स्लव कॉन्फ़िगरेशन इज देयर इन दिस SPI protocol, so which is a simple and low cost interface between the microcontroller and its output devices, ठीक है। तो ये जो प्रोटोकॉल SPI दैट इज यूज टू कनेक्ट द माइक्रोकंट्रोलर विद द वेरियस devices that can be a input or output. So here a transmitter and a receiver is contained in this SPI interface. So there is a clock and data is there. So here the clock is nothing but the narrow square wave, we already known, so which has the higher frequency, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल होगा उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, दैट इज़ अ नैरो pulse of the square wave, and this is the data which is in the binary form. So here 0 0 1 0 1 1 0 1, which is the 8-bit data is given here. So this is the figure for the serial transmission of data. So SPI interface bus is commonly used for interfacing microcontroller with the memory like EEPROM, RTC, ADC, that is analog to digital converter, DAC, digital to analog converter, display like LCDs and audio ICs, ठीक है। तो SPI बस इंटरफेस जो यूज़ होता है जनरली वो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए मेमोरी या आरटीसी या एडीसी, डैक, ठीक है, एलसीडी और ऑडियो आईसीस, इनके लिए यूज़ किया जाता है। सेंसर लाइक टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर, मेमोरी कार्ड्स लाइक एमएमसी, एसडी कार्ड्स, इवन यूज़ अदर माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। तो सेंसर या प्रेशर सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए या जो मेमोरी कार्ड्स है, ठीक है, जो कैमरा एंड मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं, दैट इज़ एसडी और एमएमसी, इनको कनेक्ट करने के लिए SPI इंटरफेस का यूज़ होता है, ठीक है। SPI इज़ अ सिंक्रोनस टाइप सीरियल कम्युनिकेशन दैट यूज़ अ क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फॉर मास्टर एंड स्लाव और स्पीकिंग इन SPI टर्म, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा सीरियल ट्रांसमिशन में देर इज़ अ क्लॉक एंड द डेटा बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज एक्सचेंज, सो मीन्स देर इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ clock and the between transmitter and receiver end to transmit the data. So the transmitter and receiver are connected with the separate data in clock lines. तो जैसे हमने देखा सीरियल ट्रांसमिशन में यहाँ पे सेपरेट
डेटा एंड यहाँ पे क्लॉक लाइन से, ठीक है, बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. So both the clock and data are sent by the master. So master is the transmitter. So we doesn't worry about the speed of data transfer. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी clock and data है sent by master means the transmitter. So it will be send out with the higher speed. So SPI is the popular because synchronous serial transmission is there, or the protocol is used in this SPI. So that will provide the higher speed and the secure data transfer with the reasonably simple hardware like shift register at the relatively less cost. ठीक है. तो SPI में सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है. सो दैट प्रोवाइड्स द हायर स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र. एंड उसके लिए जो हार्डवेयर यूज़ होगा दैट विल बी आल्सो सिंपल वन लाइक शिफ्ट रजिस्टर दैट विल शिफ्ट द बिट्स in the left or right. So here we study the working of SPI interface. So here master is there. So master is nothing but the transmitter जो data transmit करेगा, and the slave is there which is the simply a receiver. ठीक है. तो SPI interface consists of 4 main signals or the pins which are first master output and the slave input, that is MOSI. ठीक है. So first pin is this MOSI, that is master out and slave in. So that is M for master, O for out, S for slave, I for input. So that is MOSI. Second pin is master in, slave out, that is MISO. So this MISO is the second pin in the SPI interface. Third one is the serial clock, that is SCLK, that is the serial clock is there. And the fourth one is the chip select, that is CS. Okay, so that is the chip select or the slave select, that is SS. Okay, is used for selection of the chip, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंगल मास्टर एंड मल्टीपल स्लाव्स आर देयर, ठीक है, तो एट ए टाइम कौन सा स्लाव यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए एक यूनिक चिप सिलेक्ट सिग्नल रहेगा, मीन्स पर्टिकुलर चिप विल बी सिलेक्टेड. So these are the main 4 signals or pin used in this SPI interface. So this SPI bus is implemented by using a 4 signals or the 4 wires. So sometimes it is also called as a 4 wire interface. ठीक है. तो SPI interface को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे 4 pins या 4 wires necessary है between transmitter and receiver. So here SPI protocol, the devices are connected in master-slave configuration. So a multi-point interface is there. So in this type of interface one device is considered as a master. ठीक है. तो इसमें एक डिवाइस कंसिडर होगा मास्टर ऑफ द बस, यूजुअली अ माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है. तो यहाँ पे मास्टर जनरली जो रहेगा वो माइक्रो कंट्रोलर रहेगा. सो इट इज़ इन शॉर्ट डिनोटेड एज द MIC. एंड ऑल अदर डिवाइसेस like the output devices or the output ICs and other microcontroller are considered as a slave. ठीक है. तो यहाँ पे हम other microcontroller या other जो ICs है, ठीक है, so that IC will be ADC, DAC, ठीक है, means different converters, memories like that. So these are considered as a slave. So here master slave configuration are used in this SPI interface. So here one example is given, that is a connection of this SPI in master slave mode. ठीक है. तो यहाँ पे 3 slave means 3 ICs are connected which are the slave and one master is there means which is a microcontroller is there. ठीक है. तो इनमें कनेक्शन किया गया है. यहाँ पे IC1 means slave 1, IC2 means slave 2, IC3 means slave 3. ठीक है. These 3 ICs are connected with the master with the 4 wire or the 4 pin which are already studied in the working, that is serial clock, ठीक है, MCSI, MISO and the slave select or the chip select. ठीक है. तो यहाँ पे 3 chip select या slave select pins यूज होंगी because there are 3 slaves are there, slave 1, slave 2 and
Slough 3, that's why SS1, SS2 bar, SS3 bar. So this bar denotes the, it is a active low, means when it will be a 0, when there is a 0 signal on this pin, so that chip will be a selected. ठीक है, ठीक है। तो सपोज स्लाव 1 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे स्लाव 1 का जो पिन रहेगा वो 0 रहेगा, एंड एट दैट टाइम स्लाव 1 एंड स्लाव 2 विल बी अ 1 1 like that, and when this slav 2 will be selected, its bus as a 0 signal, other one will be a 1 1, so this slav 2 will be selected for the communication। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 पिंस या 4 वायर का यूज़ किया गया है, विच आर कनेक्टेड फ्रॉम दिस मास्टर टू द स्लाव। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्लाव्स को यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है फ्रॉम द मास्टर विद दिस 4 पिंस। ठीक है, एंड दिस स्लाव सिलेक्ट इज यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्लाव। So that is the example of this SPI interface, which is a multi master slave configuration is there। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट इंटरफेस है एम्बेडेड सिस्टम का, दैट इज़ UART, उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।